Good afternoon, everyone. Our today's topic is based on a grid architecture and grid technologies that are currently are using like Globus and Gridbus. And before that, we will discuss in detail a grid architecture, a layered architecture of grids also. So let's discuss about it. You can see here the grid realization step requirement कि हम जब भी grids को use करते हैं for realizing a grid, what are the various steps that are required for this? No, there are 4 steps that are required for grid realization. First one is the integration. Step 1 says the integration of individual software and hardware component into a combined network resources. मीन्स जब भी हम ग्रिड रिलेशन की रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप पे द इंटीग्रेट करना. किसको करना? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इनटू अ कंबाइंड नेटवर्क रिसोर्सेज. इन दोनों को कंबाइन करके हम एक नेटवर्क रिसोर्स बिल्ड करना, जिसे कहेंगे हम सिंगल सिस्टम इमेज क्लस्टर. मीन्स अ सिंगल सिस्टम इमेज क्लस्टर क्रिएट करना, सिंगल सिस्टम क्लस्टर क्रिएट करना, उसकी हेल्प से हम स्टेप 2 में मूव करेंगे. एट स्टेप 2, a low-level middleware to provide a secure and uniform access to services provided by different sources. At this level क्या हो रहा है एक्चुअल में? मिडलवेयर है जो क्या कर रहा है एक्चुअल में? प्रोवाइड कर रहा है हमें सिक्योर एंड यूनिफॉर्म एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है टू सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट सोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बेसिस पे. एंड स्टेप 3 जो है वो एडवांस लेवल ऑफ मिडलवेयर, जिसे हम कहते हैं यूजर लेवल मिडलवेयर. Second one is lower level, and third level, step 3 is a user level middleware that support application to development and aggregation of distributed sources. फर्स्ट वाले में हम सिक्योर एंड यूनिफॉर्म एक्सेसिंग के ऊपर काम करें. अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास? स्टेप 3 में सपोर्ट कर रहा है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर एंड एग्रीगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज. जितने भी हमने रिसोर्सेज जो डिस्ट्रीब्यूटेड लगाए हुए हैं उनको आपस में एग्रीगेट करके जोड़ के इसके साथ एप्लीकेशन के साथ बिल्ड करना. And last step is that is the construction of grid application and web portals. Mean actual application of grid is performed at this station. ये क्या कह रहा है कि grid की application बना रहा है, क्या grid application कौन सी हमें बनानी है, web portal कौन सा create करना है जो grid के लिए use किया जाएगा. On the basis this ये हमारे पास create हो रहा है. Means हमारे पास mainly 4 realization steps और requirements हैं. First step says कह रहा है कि क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट चाहिए, उसके बेसिस पे उनको कंबाइन करके नेटवर्क रिसोर्स तैयार करने. सेकंड लेवल पे हमने अगेन लो लेवल मिडलवेयर प्रोडक्ट तैयार करने जो क्या कर रहे हैं हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेस एंड सिक्योर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो डिफरेंट सोर्सेज के लिए. एंड स्टेप 3 के ऊपर यूजर लेवल मिडलवेयर है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एग्रीगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज के लिए वर्क कर रहे हैं. एंड लास्ट इज अवर ग्रिड एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल्स. सो let's discuss these 5 steps in a 5 layer architecture of or you can say that a layered grid architecture. In this layered grid architecture you can see that there are 5 levels are there: application level, user level, middleware and core middleware, and now last one is the fabrication phase. At application level ये हमारे पास लास्ट स्टेप है. हम इसको उल्टा दिखा रहे हैं आपको इन रोटेटेड मोशन कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन लेवल है ये मेरे पास लास्ट स्टेप है. स्टेप 4 को हम पहले डिफाइन करें. एप्लीकेशन एंड पोर्टल जो है हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? साइंटिफिक पोर्टल, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, कोलैबोरेशन एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन, वेब असेंबली एप्लीकेशन. ऐसा लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है जो ग्रिड के ऊपर काम कर रही है. वो सारी एप्लीकेशन कहाँ स्टे करेंगी? वो इस स्टेज पे करेंगी. एंड हम इसमें आप दे सकते हैं ऑटोमेटिक ग्रिड इकोनॉमी इज देयर, ठीक है. एडेप्टिव मैनेजमेंट इज देयर, दैट इज मैनेजमेंट प्रोसेसेस दैट इज परफॉर्म इन ऑल लेयर्स. इन 4 के 4 स्टेप पे ये मैनेजमेंट चलेगी और ऑटोनॉमी यहाँ पर चलती रहेगी. अब ये 4 लेयर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास देखना सेकंड वन क्या है? यूजर लेवल मिडलवेयर. अब यूजर लेवल मिडलवेयर हमने डिस्कस किया था. क्या है यूजर लेवल मिडलवेयर? यूजर लेवल मिडलवेयर टू सपोर्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एग्रीगेशन. ये एग्रीगेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है और हमारे पास डेवलपमेंट करता है. सो यू कैन सी here we use a language compilers, libraries, debuggers and monitors and web tools. ये सारे क्या करेंगे? एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के काम करेंगे. और रिसोर्स मैनेजमेंट शेड्यूलिंग भी आगे यहाँ परफॉर्म की जाएगी जो हमारे पास जितने भी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेसेस है. आफ्टर दिस तब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कौन सा था? कोर मिडलवेयर. स्टेप 2 है मेरे पास. स्टेप 2 क्या कर रहा है? ये बॉटम अप अप्रोच है तो लो लेवल के ऊपर काम कर रहा है. ये सिक्योर एंड यूनिफॉर्म एक्सेसिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो डिफरेंट सोर्सेज के लिए. जो रिसोर्सेज यहाँ पर हमने यूज किए हैं उनको हमने रिसोर्सेज देनी. अब सर्विसेज क्या हो सकती हैं? उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, डाटा प्रोवाइड करना, प्रोसेस प्रोवाइड करनी, ट्रेडिंग प्रोवाइड करनी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इनिशियलाइजेशन करनी. ये सारी जो सिक्योरिटी लेयर है वो सारी यहाँ पर इस लेवल पे काम करी, कोर लेवल पे. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स कंपाइलेशन रिसोर्सेज करिए, कपलिंग रिसोर्स सर्विसेज यहाँ पर परफॉर्म होंगी. एंड लास्ट वन इज दैट इज स्टेप 1 दैट इज फैब्रिकेशन. जहां पर हम क्या करेंगे? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे. अब यहाँ पर फैब्रिकेशन होगी. फैब्रिकेशन किसकी होगी? हमारी ग्रिड की. यहाँ पर लोकल रिसोर्स मैनेजर है और एक नेटवर्क रिसोर्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है. यू कैन सी हियर द लोकल रिसोर्स मैनेजर जो है मेरे पास वो क्या कर रहा है?
ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, क्यूइंग सिस्टम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, ऐप कर्नल्स हैं एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज हमारे पास लोकल सब रिसोर्स मैनेजर ये हमारे पास वर्क कर रहे हैं एज अ लोकल रिसोर्सेज। और उसके बाद हमारे पास नेटवर्क रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? नेटवर्क पे क्या आएंगे हमारे पास? वेरियस अदर कंप्यूटर्स, वेरियस नेटवर्क, स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डाटा सोर्सेज, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे जो है जो लोकल एरिया नेटवर्क एरिया पे है, रिमोट एरिया पे पड़े हैं, उनको हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। और फैब्रिकेशन पे क्या होंगे? सारे इंटीग्रेट होकर लोकल और नेटवर्क वाले मिलकर एक कंबाइंड अप्रोच बनाएंगे। So this is our layer grid architecture. So let's explain about a grid technology. In grid layer architecture, I explained brief about this again. In grids, there are 4 steps are available. These 4 steps are fabricated in this formation, where adaptive management is there. At each level, we have different processes. First one is the application layer. Second one is the user level and middle layer, middleware, or as the third one is the core middleware, and last one is the fabrication layer. So let's explain next, that is grid technologies. ग्रिड टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं जो लेटेस्ट हमारे पास चल रही हैं आजकल? दैट इज ग्लोबस फ्रॉम यूएसए एंड ग्रिडबस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. दे आर 2 ग्रिड टेक्नोलॉजीज दैट आर adopted mostly, that is globus and second one is gridbus. Globus is used by USA and gridbus is used by Australia. So let's explain one by one. ग्रिड मिडलवेयर टेक्नोलॉजी, हमने बात की है मिडलवेयर टेक्नोलॉजी. मिडलवेयर टेक्नोलॉजीज जो है वही मेनली हमारे पास ग्रिड का काम कर रही हैं, और जितने भी मेरे पास जो ये ग्रिड रिसोर्स टेक्नोलॉजीज हैं ये सारी मिडलवेयर के अंदर काम करती हैं. तो हमारे पास हमारे ग्लोबस, ग्रिडबस, यूनिकोर, लेजेंड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, बट हमने इनमें से 2 ही पढ़ने, दैट इज ग्लोबस एंड ग्रिडबस. ग्लोबस इज बेस्ड ऑन आर्गन नेशनल लैब ISI ने डेवलप की है, एंड सेकंड ग्रिडबस इज डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, एंड लाइक यूनिकॉर्न यूरोपियन प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के ये प्रोजेक्ट की थी. यू कैन सी है द मिडलवेयर क्लाइंट एंड पोर्टल्स जितने भी हैं हमने इनके कंपैरिजन किया है यूनिकॉर्न, ग्लोबस, रीजन एंड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स कि कौन कौन से लेवल पे या कौन कौन सी लेयर पे ये काम कर रहे हैं. There are 4 layers of our grids are here. Architecture is here. First layer is middleware, client and portal. उसके ऊपर ये सारे काम करते हैं, but Globus नहीं काम करती because this use a third party solution for these type of layers. And user level middleware पे भी ये काम नहीं कर रही, वो भी कह रहा कि इस लेयर के ऊपर ये भी थर्ड पार्टी यूज कर रही है, बाकी सारे इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं. एंड लो लेवल मिडलवेयर पे सारी की सारी वर्क कर रही है, फैब्रिकेशन फेज पे सारे के सारे वर्क कर रहे हैं. मीन्स जो मिडलवेयर हैं जो सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं छोड़ के ग्लोबस को. So let's discuss about what is Globus. A Globus क्या है? एक टूल किट है. You can search it by Globus on a globus.org website is also available. A global project are available. This is the architecture of Globus toolkit. You can see here there is an application phase, third party user level, middleware, and this is a Globus level. A Globus level is contain some information like grid resource management, grid information services, grid data management, GSI security layer, grid resource and local services. ये सारी की सारी Globus के अंदर contain की हुई हैं. You can see this with the help of examples. You can say that application, a simple application process where all application are done, like any application of grid like website or any application like any grid application is there. And third party user level middleware means a third party use a middleware for this, means for these 2 middleware, client protocol and user level middleware, their third party solution is there. So these 2 layers working by their third party options. And next one is globals. Globals layer के अंदर क्या है? Globals is contain a grid resource management. A grid resource management is contained by GRAM. We also say the GRAM and GAS. And GRAM and GAS are 2 grid resource management tools are available that are used to manage a Globus. And second one is that is MDS. MDS is the grid information services that is used for information services handling of a grid. The information traveling between networks, information is gained between networks. These are all are handled by a grid information services. And next one is that is grid FTP and replicator. Replicate log क्या है हमारे पास? Replicate catalog log जो है मेरे पास ये क्या करता है? Grid management activities है, जितनी भी grid की data management activities है, these are performed by this one. एंड हमने देखा यहाँ पर कि GSI सिक्योरिटी लेयर इज देयर, और ये सिक्योरिटी लेयर क्या करिए कि हर एक लेवल के ऊपर, ग्लोबल के ऊपर जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज लगे हैं मैनेजमेंट के, इंफॉर्मेशन सर्विसेज के एंड डाटा मैनेजमेंट के, इन सभी के ऊपर सिक्योरिटी बिल्ड करना, दिस इज टास्क ऑफ GSI सिक्योरिटी लेयर. एंड लास्ट इज अवर ग्रिड रिसोर्स एंड लोकल सर्विसेज. जितने भी हमारे पास लोकल सर्विसेज हैं, ग्रिड सर्विसेज हैं, एप्लीकेशन सर्विसेज के बाद जो हमारे पास जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बनती है वो सारी इस लेयर पे बनती है. So this is all about a Globus toolkit. Let's discuss some of the toolkit services. We also discuss here also the Globus toolkit and Globus toolkit services है क्या हमारे पास. सिक्योरिटी सर्विसेज क्या हो सकती है इसके अंदर हमारे पास? ये जो Globus toolkit सर्विसेज है ये कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट वन इज अगेन सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज परफॉर्म बाय GSI. We also mentioned here that GSI is the security layer that is used for this.
So this services is GSI services. These are the PKI based security services, the authentication services that are adopted by this. जॉब सबमिशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, ये क्या किसकी है हमारे पास, ये हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज है ग्रिड की, ठीक है। तो इसका मेन जो फर्स्ट वन जीरैम है, जीरैम क्या करती है, ग्रैम जिसे क्या होते हैं वो करती है जॉब सबमिशन मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करेगी। और एमडीएस इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन सर्विसेज and next one is GAS is used for remote file management, means job submission and remote file management are a single task, that is management of task of a resource management. So this is our resource management services. Next one is remote data catalog and management tools. These are the tools that are used for data catalog and management tools activities like this one, grid FTP and replica catalog. These are handled by this one. And additionally move to a WSRF, that is the web service resource framework, is used to handle these services also. I mean, these are the main Globus toolkit services that are adopted to handle a Globus. So these are some sample of high level services. After this, some of high level service कौन कौन सी हमारे पास, resource broker, co-allocators, communication IO libraries, parallel languages, collaborative environment and others. These are the high level languages of services are available. So let's discuss about in detail where this is used. This is used in a Melbourne by a GridBus project is there, the enabling leasing of ICT services on demand. ICT is the services that are World Wide Web is using these services, World Wide groupings uses those. So these are a geographical services that is handled by Melbourne. So like this you can see there's the parameter on the basis of rupees or cost parameter, cluster parameter or data parameter all combined to unit a one approach. It is called a grid bus. So that is pushes a grid computing into a mainstream computing, means they are using a main computing element, that is grid computing, for their own task. So this is all about a grid bus project. Or you can see this, the grid project, grid labs are there, University of Melbourne using this task. About this, grid is an open source, so grid and R&D project are focusing on grid economy, utility grid services and grid oriented computing. I also discuss about this on the basis of these they using these services. And middleware component क्या क्या include की जाती है यहाँ पर, .NET based grid marketing services, grid bank services, visual tools and creation services, grid services brokers, grid sim toolkits. These are the various application software or very middleware software that are used by a grid project, that is grid. So this is a grid bus architecture layer. We will discuss a second type of grid, that is grid bus here in grid bus project to discuss. Before that we will discuss Globus toolkit services. So after that we will discuss about, in this we will discuss a global toolkit services and their architecture. So in this topic we will discuss a grid. You can see the grid bus architecture layer here. Application layer is there, workflow application programming interface there, grid bus, grid services are there, grid sources are there. Means we also see that this grid bus is based on all four layers of grid architecture. Grid layer architecture four layer ये support करता है, तो application भी perform करेगा, workflow application program interfaces are there, adaptive management is there, grid bus services broker क्या क्या है इसके अंदर, एडेप्टर लेयर है, ग्रिड इकोनॉमी एंड एलोकेटर है। एडेप्टर लेयर क्या करती है, जितने भी एक्विटेटर, ग्लोबस एक्विटेटर, यूनिकॉर्न एक्विटेटर, जितने भी एडेप्टर्स हैं हमारे पास सारे के साथ, जो हमारे पास ग्रिड सर्विसेज को हैंडल करने के लिए, एडेप्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल है, वो सारे यहाँ पर आएंगे। दीज अल्केलिन, ग्लोबस एंड यूनिकॉर्न आर द नेम ऑफ द वेरियस ग्रिड सर्विस आर्किटेक्चर। ग्लोबस हमने पढ़ा है अभी, वो इसी के अंदर ही कंटेन हो रहा है। वो कहते हैं ये उनको यूज करके बनता है। ग्रिड इकोनॉमी एलोकेशन, जितनी भी इकोनॉमी एलोकेशन है वो यहाँ पर होगी, हमने दिखा है यहाँ पर। यू कैन सी दिस फिगर, इकोनॉमी एलोकेशंस like this one, utility and grid services oriented like this one, and service oriented computing this one। ये सभी को कंबाइन करके ये बन रहा है, इसलिए कहता है इनके बेसिस पर सारी यहाँ पर कंबाइंड है। एल्कोन, ग्लोबस एंड यूनिकॉर्न जो है ये सारे ग्रिड ट्रेडिंग के लिए भी काम आते हैं, जितनी बैंक सर्विसेज है उसके में काम आएंगे, क्योंकि वी आर वर्क ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन बैंकिंग ऑल सेक्टर ऑल्सो, तो ग्रिड वहां पर भी काम आएंगे। तो ग्रिड सोर्सेज एंड लोकल सर्विसेज लास्ट में हमारे पास आती हैं। दीज आर अ ग्रिड बस आर्किटेक्चर, सिंपल आर्किटेक्चर। So let's comparison about these architecture, that is grid bus and globus, legion and unicorn. You can see this figure on the basis of focus, category, architecture, implementation, इन सभी पैरामीटर के बेस पे हम इसको निकाल सकते हैं। You can see the on the basis of focus, high programming है, low level services है, high level programming models are using for this, categories are these, architecture is using this one, implementation model is this one. They're using architecture like vertical and multinational layered architecture, vertical integrated, I mean all differences declared in front of you on the basis of implementation technique. They use a Java, they use C++, Java, Unix, and on the basis this simple differentiation is there. This is important for your exams also. Comparison between various middleware technologies. So these are the technologies that are used for middleware in a grid architecture view. So this is all about a grid architectures. In next topic we will discuss about a grid applications, and we will conclude our this all video tutorials of grid technology. Hope so you enjoy it, guys. If you have any doubt, any query, you can comment me out on my WhatsApp number or my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.